As I get reminded of one of the plays of William Shakespeare, which is Measure for Measure, there is a very influential line that comes there, which says, "Our doubts are traitors and make us lose the good we oft might win by fearing to attempt." So, it is the courage to listen to our heart in the moments of adversity which allows us to experience the countless capabilities that we have and the immeasurable strength that we possess. Our platform, Graduate Scholars Talk series, is a testimony of such strength and constant perseverance in the desolating phase of the global pandemic. And it has been a strength pillar for many such scholars and research enthusiasts. And this platform has catered to an academic ambience that has brimmed with enriching learning experiences for both us and for the speakers as well. So it has made people heard. So, in a world where connections often feel fleeting and conversations can be superficial, this evening we have reached a remarkable milestone, that is 190 talk sessions that have brought people together in profound ways. Each session has been a journey, a space where voices have been heard, stories have been shared, and emotions have been explored, both in scholarly and personal ways. So it's not just about the number, it's about the countless moments of vulnerability, of academic excellence, of understanding, of research analysis, and growth that have unfolded over a period of time. So, as we reflect on this achievement, we celebrate the courage of all those people who opened their hearts and minds for different scholarly endeavors, creating a tapestry of experiences that enrich our student and teacher community. Together, we have fostered an environment where every voice matters and every story counts, and that is what GSTS has all been about. So, a very warm good evening to the galaxy of intellectuals present here for the 190th session of the GSTS in the continuation of the articulation of most exquisite presentations by the best of our speakers. I am Samriddhi Kanpal, and I extend a heartfelt gratitude to all of you for sparing your Sunday evening with all of us, and that too joining us on a day when we are achieving another milestone. So far, as you see, all the numbers don't matter, and we have a long way to go. We have now completed 190 talks for 190 Sundays, 190 speakers from a century of different locations across the country, and exploring 190 different ideas. And all of this has been made possible through this one sole aim of enhancing the research work experience of scholars and graduates of the initiative GSTS that has been enthusiastically working since 7th of February 2021. So the team behind this execution is worth to be mentioned, which includes Mr. Shubham Diwari, Mr. Saurabh Singh, Mr. Ajay Gupta, Ms. Manvi Saraswat, Mr. Shailendra Rathod, Mr. Manthan, and I, and all of us have been working and exploring various domains of knowledge under the constant guidance and motivation of Dr. Manish Karmwar, who has been contributing his untiring efforts as the advisor of our platform. As I mentioned before, this is another milestone that we are achieving today. We are also heading towards our double hundred, our double century. So far, it's like important to just have a look at the important achievements that we have acquired as a community for students. So we have been telecasted twice on Doordarshan News, where we were featured in their show Good News Jazba India Ka. We have hosted an array of scholars that include graduates, postgraduates, MPhil students, PhD students, and even school students as well. And all of this has been continuing so far with a range of kaleidoscopic topics, which is one of the reasons why we were featured in the Changemaker Summit by G20. So it's great to have have come so far, and there are always miles to go, and it's a constant and collaborative effort of all the student and the teacher community who have been working tirelessly for these Sundays to make the best versions of GSTS. So, and one of the important things that is worth to be mentioned here is the fact how the guests of honor have been
the great pillars of strength for all of our speakers. They are the ones, they have been the ones who have guided our speakers and have refined their research presentations. And I think we have the privilege of having one such mentor with us again today. So before that, there is a very beautiful saying by Anne Sweeney, and she says that I think the greatest thing we give each other is encouragement. Knowing that I'm talking to someone in this mentoring relationship who is interested in the big idea here is very important to me. I think if we were just about helping to get to the next step, it would be a heck of lot less interesting. So encouragement is something which adds icing to the cake. So I, on behalf of the fraternity of GSTS, would like to very extend a very warm welcome to our today's guest of honor, who will be the pillar of encouragement for our today's speaker. So, like we would all like to welcome Dr. Miss Menka Singh, and she is an associate professor of economics at Motilal Nehru College. She did her master's from Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune, and her MPhil from GNU in regional development. And she is currently pursuing her PhD from African Studies, Delhi University. So most of her research and the research papers that she has worked on are on agricultural sector. So ma'am has a very diligent teaching experience of almost 20 years at various colleges of Delhi University. She has taught different undergraduate papers of economics with the main focus on mathematical economics. She has been a part of many important committees of the college and university, and currently she is heading the NC Web Center of Motilal Nehru College. So, ma'am, we are truly honored to have you with us today to share your most precious time, insights, and experiences. So, before we get ahead with our further proceedings, we would like to have some of your introductory remarks along with the permission to continue ahead. So, ma'am, over to you. Thank you very much. I feel honored to be a part of your GSTS, and I'm very happy that I'm a part of your milestone 190 Sundays and 190s talk series. So this is my first time with you people, and I hope I'm going to enjoy it. And thank you. Thank you so much, ma'am, for your kind words. And we would be coming back to you again after our speaker concludes our presentation to take in your suggestions, comments, and extra insights on the topic. So, Sure. moving ahead with our today's event, it is circulated, it is encapsulating the essence of the Securities and Exchange Board of India, which has been playing a crucial role in regulating the securities market in India. So we are living in a very globalized world. We have evolved a lot, but there are certain things that we are still vulnerable about, and one such things that we all face in our daily lives are scams. So, but there is a deeper insight that we all need to gather for this everyday confrontation of ours. And for the same, I would now like to invite our speaker for today's session for GSTS 190, Ms. Palak Punshi. So, Palak, the stage is all yours, and good luck for your topic. Thank you so much. Good evening to one and all present here. I am Palak Punshi, currently pursuing Bachelor's in Commerce from Daulat College, University of Delhi. I would like to thank to each and everyone present here to take out your time and to listen to me. I would like to thank Ms. Menka Singh, ma'am, our guest of honor, for your valuable time here. I would like to thank all the GSTS members behind me who are working throughout this week for me. I would like to thank the GSTS founder and advisor, Mr. Manish sir, for your valuable supports and all. So I am someone who is so much deeply passionate about finance, stock market, investment and all. And this my curiosity has bring me here to speak about this topic, that is turning scams into lessons. So yeah, turning scams into lessons, that is, and SEBI's role in rebuilding trust and empowering investor. So what does the scam mean? Like हमने ये देखा है बहुत नॉर्मली, हम कहीं भी जाते हैं हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है.
हमने बचपन में भी ये बात बहुत देखी है कि हम कुछ परचेस करने गए, हमें एमआरपी से ज्यादा में हमें उन्होंने सेल कर दिया चीजें। ये सब हमारे साथ डे टू डे लाइफ में हो ही रहा है। देन आफ्टर यू कैन सी कि आपको शॉप ओनर्स कभी एक्सपायरी प्रोडक्ट सेल कर देते हैं बिकॉज आपका ध्यान नहीं रहता है उस चीज में। दिस ऑल आर जनरली द स्कैम्स जो हमारे साथ डे टू डे लाइफ में हो ही रहे होते हैं। एंड हमारा द रीजन वो हमारे साथ हो रहे होते हैं बिकॉज हम चीजें नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, हमारा उस चीज में ध्यान नहीं होता है। So, my objective for the talk would be understanding various type of financial scams which happen in the stock market, then how SEBI came into the power, उसका role क्या था, उसने stock market में क्या contribute किया, फिर इतने स्कैम्स हो रहे थे डे टू डे लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो नेसेसरी थी ना कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट टूट रहा था। सो सेबी ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या हुआ कि फिर से इन्वेस्टर्स का उसमें ट्रस्ट बन रहा था, लोग आज भी देख रहे हैं कि इतना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टर एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास किसी चीज की एजुकेशन है तो आप वो चीज को बहुत अच्छे से रूल कर सकते हो। देन देयर वर सम प्रीवियस मिस्टेक्स जो कि इन्वेस्टर्स इवन रेगुलेटरी बॉडीज ने मेक की है, एंड हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सो दिस वुड बी माय ऑब्जेक्टिव फॉर द टॉक, एंड लेट्स गो अहेड विद दिस। सो हमने समझा कि स्कैम क्या हो रहा होता है, हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत वी सी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमारे साथ हो रहा होता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही होती है कि आपका ध्यान नहीं रहता है, बट जब सडन यू सी कि आपका प्राइस गिर गया, तब आपका उसमें ध्यान गया कि हाँ यार पीछे तो ये हो रहा था। ऐसे ही स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है जो कि यू विल सी कि इन्वेस्टर्स को ऐसे फंसाया जाता है कि दे थिंक यार हमारे साथ तो सब कुछ ठीक हो रहा होता है, बट पीठ पीछे व्हेन यू सी कि अब प्राइस गिर गया मतलब हाँ पीछे ये वाली चीज हो रही होती थी। सो ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं जो कि इंडियन मार्केट में हो रहे होते हैं। कि क्या होते हैं, सब लाइक कोई कंपनी है, दे आर कमिंग विथ अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, सो देर आर सो मेनी पीपल्स बिहाइंड दैट कि या दे नो कि ये कंपनी इस चीज के साथ आ रही है। तो ऐसे ही एक बार हुआ था कि राकेश झुनझुनवाला, ही वॉज वन ऑफ द इंडियन बिलियनरी इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट, एंड एक बार ये हुआ था कि इनके कजिन थे, he traded in the share Fortis Healthcare just before when the company was coming with some new thing. तो उसमें ये हुआ कि ये चीज फील हुई कि अभी तक तो वो इंफॉर्मेशन बाहर आई नहीं है, तो हाउ ही इज डूइंग दिस मच ट्रेडिंग विद दिस स्टॉक। तो इसमें सेबी केम विद सम पावर कि यार ये क्या हो रहा है, एंड व्हेन दे गेट टू नो कि यार तुम्हारी ट्रेडिंग तो ऐसी इंफॉर्मेशन के बेस में हो रही है जो कि अभी तक पब्लिक को अवेलेबल नहीं की गई है। सो इसके चक्कर में उनको अराउंड 18.5 CR का फाइन किया गया था। देन और क्या होता है कि देर आर सो मेनी इन्वेस्टर्स, यू कैन सी कि बहुत सारे लोग होते हैं विच गिव एडवाइस टू द पीपल कि आप ये वाला स्टॉक परचेज कर लो, दिस विल गिव यू हायर रिटर्न्स इन द प्रॉफिट। एंड जब वो प्रॉफिट वगैरह हो जाता है, वो क्या करते हैं कि अपना प्रॉफिट निकाल के तो मार्केट से निकल जाते हैं। ऐसा ही एक बार हुआ था, देयर वाज वन बॉलीवुड स्टार अरशद वर्सी जो कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडवाइस दिया करता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, एंड इट वाज सीन दैट कि वो अपने प्रॉफिट के लिए वो सब कर रहा था। एंड व्हेन ये इशू हाईलाइट हुआ तो सेबी ने उसको सीधा स्टॉक मार्केट से ही बैन कर दिया था। उस सो दिस इज नोन एज पंप एंड डंप कि क्या हुआ, पहले तुम्हारा प्राइस हाई किया, तुमको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाई गई कि भाई दिस स्टॉक विल बी गोइंग टू गिव यू अ हायर रिटर्न्स इन द फ्यूचर, एंड जब तुमने वो स्टॉक परचेज कर लिया यू सॉ कि यार ये तो इसके प्राइसेस सडन फॉल हो रहे हैं। सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ फ्रॉड जो कि हमारे स्टॉक मार्केट में हो रहे होते हैं, एंड हम लोगों की बातों में आके उन चीजों को कर लेते हैं विदाउट हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज। देन यू विल ऑल्सो सी कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि अपने आप को अच्छी दिखाने के लिए कि दे आर गुड इन वेल्थ,
उनका प्रॉफिट स्टेटमेंट वगैरह, उनकी जो भी बैलेंस शीट है, उनके एसेट्स लाइबिलिटीज वगैरह बहुत अच्छे हैं, दे आर शोइंग यू, बट वो असली में ऐसा नहीं है। सो वो आपको मतलब गलत रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट करो सो दैट दे कैन प्ले विथ यू। ऐसा ही हुआ था सत्यम कंप्यूटर स्कैम में कि दे वर मैनिपुलेटिंग देयर रेवेन्यू, देयर प्रॉफिट्स फ्रॉम वेरियस टाइम, and certainly the founder of Satyam Computer, रामालिंगा राजू ने एक लेटर पब्लिश किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ये कहते हुए कि यार आई वाज मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस, कि मैं रेवेन्यू ज्यादा शो कर रहा था, मैं प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सब गलत शो कर रहा हूँ, एंड इट वाज अराउंड ऑफ ₹7,000 crore. So this is also known as the falsification of records. आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो आपका फायदा उठा सके। फिर क्या होता है कि बहुत सारे आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह दिखेंगी जहां पे यू विल सी कि वो आपको बहुत प्रॉम्प्टिंग रिटर्न्स दिखा रहे होते हैं कि इफ यू विल इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक आपको तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो एक बार ऐसे हुआ था, सहारा इंडिया परिवार ने अराउंड 2010 विच वाज लेड बाय सुब्रता रॉय, उन्होंने फंड रेज करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी वो दिखाई कि यार हम आपको हायर रिटर्न्स देंगे, एंड उन्होंने इसी चक्कर में अराउंड 24,000 करोड़ पब्लिक से लिया था विदाउट प्रॉपर रेगुलेटरी कंट्रोल। एंड यू विल सी कि व्हेन देयर वाज अ टर्न कि आपको इन्वेस्टर्स को रिटर्न करना है अमाउंट, मतलब यू हैव टू गिव प्रॉफिट्स टू एवरीवन, तो वहां पे आपको ये पता चला कि दे वर गिविंग दैट इंटरेस्ट टू द अर्लियर इन्वेस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द newer investors revenue and not from the profit of the company. So this time of fraud is known as Ponzi scheme, जहां पे earlier investors को newer investors के पैसों से return दिया जाता था कि they will show कि you have very good returns, आपके पास सब कुछ है, but असली में ये चीज नहीं था। they were not giving the returns from the profit of the company. वो लोग दूसरों के पैसों से दूसरों को दे रहे थे this. देन ऐसा भी बहुत बार होता है कि स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह जो होते हैं दे यूज द क्लाइंट्स। ऐसा होता है कि लाइक यू स्टॉक ब्रोकर नोस कि ये क्लाइंट है मेरा एंड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द पर्टिकुलर शेयर्स ऑफ द कंपनी इन अ ह्यूज, एंड कहीं ना कहीं आगे जाके उसका प्राइस बढ़ेगा, जो कि यू नो ना कि वो ब्रोकर को तो बेनिफिट देगा। So what does the stock broker और fund manager do? वो अपने पर्सनल अकाउंट से वो शेयर को पहले ही बाय कर लेता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा मैं अपना प्रॉफिट अर्न करके वहां से निकल जाऊंगा। So this is known as front running when broker uses client. So these are the various type of financial frauds जो हमारे स्टॉक मार्केट में हो रहे होते हैं, बट हम बहुत अनअवेयर होते हैं एंड वी डोंट गेट टू नो कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कि इतने सारे स्कैम्स हो चुके हैं। जैसे एवरीवन नोज कि हर्षद मेहता ने क्या किया था। हर्षद मेहता ने फेक बैंक रिसिप्ट्स बनाई जस्ट कि वो बैंक में जाके लोन ले सके उसको, एंड देयर वाज समहाउ अ फॉल्ट ऑफ बैंक कि उसने उसमें प्रॉपर रिसर्च नहीं किया, एंड या सो उन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया एंड दे गिव लोन टू द हर्षद मेहता, एंड वो उस पैसे को क्या यूज करता था, वो शेयर्स को शेयर्स के प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए यूज करता था। सो वो क्या करता था, सर्कुलर ट्रेडिंग जैसी स्ट्रेटजीज फॉलो करता था जिसमें वो बाय एंड सेल ऑफ शेयर्स थ्रू अपने ही लोगों में करता था जिसके साथ वो इन्वॉल्व था। सो वो कम मतलब अराउंड 4,000 करोड़ रुपीस उसने बैंक से लोन में लिया था जस्ट बाय यूजिंग द फॉल्स बैंक स्लिप, ताकि वो शेयर्स के प्राइसेस इन्फ्लेट कर सके और अपना फायदा निकाल सके। वी डिस्कस द सत्यम कंप्यूटर स्कैम की कैसे उन्होंने अपनी रिकॉर्ड्स गलत दिखाई अराउंड 7,000 करोड़ की, एंड देन उन्होंने अपना प्रॉफिट देखा एंड यू विल नॉट बिलीव कि उस टाइम पे उसका शेयर प्राइस अराउंड 500 to 600 चल रहा था,
बट विद इन अ फ्यू डेज लाइक उसका 80% स्टॉक प्राइस फॉल हुआ, वो ₹40 में आ गया था। बट ये चीज अच्छी हुई थी कि उस कंपनी को स्टेबलाइज करने के लिए उसका एक्विजिशन हो गया था टेक महिंद्रा के साथ। देन सिमिलर वाज द केतन परेख स्कैम 2001। उसमें क्या हुआ था कि ही ऑल्सो यूज टू टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक, बट वो क्या करता था, जिस शेयर के प्राइसेस उसने इन्फ्लेट किए थे थ्रू सर्कुलर ट्रेडिंग ओनली, वो उसको कोलेटरल में रखता था बैंक के पास। अब क्या हुआ कि देन when the bank noticed कि यार ये स्टॉक के प्राइसेस तो फॉल हो रहे हैं, they went to केतन परेख and tell कि भाई अब तुम हमारे पैसे रिटर्न कर दो। सो ही वॉज ब्लैंक, उसको नहीं पता था क्या करना है एंड ऑल। एंड ये रिवील हो गया था कि हाँ, ही वॉज डूइंग समथिंग, ही वॉज इन्वॉल्व इन द माल प्रैक्टिसेस एंड ऑल। सो वी कैन सी, हाँ ये सारी चीजें हो रही है आज भी स्टॉक मार्केट में। इवन आज भी हमको पता नहीं है, बट सडन अराउंड 2023 के अर्लीज में देयर वाज वन हिडन बग रिसर्च जो कि अडानी ग्रुप के ऊपर पब्लिश की गई थी कि दे आर मैनिपुलेटिंग द स्टॉक प्राइस एंड वो कुछ अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहे हैं। बट ये अभी भी रेगुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट चल रही है, सो लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट विल कम एंड ऑल। या सो अब हमने देखा कि भाई इतने सारे क्या बोलते हैं स्कैम्स हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होंगे दे विल थिंक वेरी मच बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक मार्केट। सो ऐसा कुछ ना कुछ तो होना था ना कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना रहे उस चीज में। सो देयर केम द सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, which is going to look after the malpractices, doing the investigations and all. So it got the power into 1992 when the SEBI Act was passed into the Indian Parliament. Yeah, it came into the power and उसका अब रोल क्या था स्टॉक मार्केट में कि वो जितने भी स्टॉक्स इन NSE BSE निफ्टी वगैरह में हैं उसको ध्यान दें कि हाँ आर दे ट्रेडिंग, आर दे डूइंग द राइट थिंग, क्या कुछ गलत थोड़ी हो रहा है हमारे साथ। सेबी का रोल कहीं ना कहीं ये भी था कि हाँ अब इन्वेस्टर्स तो इन्वेस्ट कर रहे हैं बट दे वांट ना कि उनका पैसा सही जगह पे रहे, दे आर सेफ। तो दे हैव वर्कड ओवर द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ऑल्सो। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड की है बाय यू कैन सी लाइक टुडे विच ओवर कंपनी इज लिस्टेड और यू आर ट्रेडिंग इन दैट कंपनी, उसकी रिकॉर्ड्स आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं कि उसका क्या रेवेन्यू है, क्या उसके प्रॉफिट्स हैं, क्या उसकी नेटवर्थ एंड ऑल, कि आप सोच सको यार आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है उसमें। देन सेबी हैज ऑफ कोर्स लुक्ड इनटू कि भाई अब फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस कम हो। ऑफ कोर्स देखो जिसको करना है वो तो करेगा, बट यू हैव टू, दे आर फोकसिंग कि हाँ जितना मिनिमाइज वो कर सके वो करें। एंड समाउ आज की डेट में सेबी ने एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस किया है कि आपको बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग टू द इन्वेस्टिंग आपके पास हो। वो बहुत सारे कोर्सेज एंड यू विल नो कि आपको बहुत इजीली हर जगह इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि यू विल सी कितने सारे सेबी सर्टिफाइड कोर्सेज भी हैं कि आप उसमें आप उसकी एजुकेशन गेन कर सकते हो। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए सो यू हैव टू पे समथिंग, बट इफ नॉट आप नॉर्मल एजुकेशन पर्पज से उन सब चीजों को देख सकते हो। देन सेबी ने बहुत सारी चीजें ऐसे की कि भाई कंपनीज जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट उसमें बना रहे। सो देयर वर वेरियस इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय सेबी ऑफ कोर्स। So the first one is they have made the PAN card compulsory. आप देखोगे कि जैसे ही आप किसी भी में आपने आपको रजिस्टर करते हो कि आपको स्टॉक ट्रेडिंग करनी है या, तो आपसे पैन कार्ड कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि एक बार क्या हुआ था, यू विल सी कि बहुत लोग क्या करते थे कि आईपीओ अलॉटमेंट जब होता था तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ना बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट से अपने आप को रजिस्टर कर देते थे कि उनको आईपीओ अलॉट हो जाए और फिर क्या बोलते हैं दे कैन अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम देम और फिर वो अपना प्रॉफिट अर्न करके मार्केट से निकल जाएंगे।
सो पैन कार्ड कंपलसरी करने से क्या हुआ कि अब आप एक आईपीओ में एक ही बार रजिस्टर कर सकोगे, ऑल्दो इन अ लॉट यू कैन डू। सो इससे ये हुआ कि सबके पास इक्वल राइट्स है कि हाँ, एवरी इन्वेस्टर गॉट द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू हैव द आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस। फिर क्या किया उन्होंने, इंट्रोड्यूस किया एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। व्हाट डज दिस मीन कि जब आप आईपीओ में वो करते हो, इन्वेस्ट करते हो, सो आपका अमाउंट वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाता है। सो इससे क्या होता है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो ह्यूज अमाउंट में करते जा रहे थे कि यार होगा, जितना भी अलॉट होगा वी विल सी, बट इससे ये हुआ कि जो सीरियस इन्वेस्टर्स थे जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट था, वो ये सब नोटिस करके ही उसमें इन्वेस्ट किए। सो इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय सेबी कि हाँ, योर अमाउंट इज सेफ। आपका नो डाउट आपको इंटरेस्ट में मिलता ही है उस अमाउंट में जब तक वो अमाउंट ब्लॉक्ड होता है आपके बैंक अकाउंट में। सो उसके बाद T+2 सेटलमेंट किया। व्हाट डज दिस मीन कि अगर आप कोई भी ट्रेडिंग किए मंडे को, सो अप टू वेंसडे वो चीज सेटलमेंट हो जाएगी। इफ यू हैव बाइड शेयर, आपके पास वो शेयर आ जाएगा आपके पोर्टफोलियो में। सो इससे ये हुआ कि किसी को भी इतना डर नहीं था कि क्या पता मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो जाए। ऑफ कोर्स यू विल गेट टू नो इन 2 days ना कि आपके साथ क्या हुआ, तो आप उसमें एक्शंस ले सकते हो। ठीक है, रिस्क रिड्यूस हो गई कहीं ना कहीं, एंड इट वाज इवन अट्रैक्टेड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू कि या इट इज सेफ सो वी कैन इन्वेस्ट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। उसके बाद there was an initiative taken कि सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि यू विल सी जब सडन प्राइजेस फॉल होते हैं या इंक्रीज होते हैं, सो एक मार्केट में पैनिक क्रिएट हो जाता है कि ये क्यों हुआ। सो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए सेबी ने क्या किया कि सर्किट ब्रेकर क्रिएट किया। दैट मीन्स कि अगर आपका ओपनिंग प्राइस जो भी है वो तुरंत इफ 10% से डिक्रीज हो गया तो आपको 1 आवर का हॉल्ट टाइम मिलेगा। अगर वो 15% से डिक्रीज हुआ तो आपको 2 आवर का हॉल्ट टाइम मिलेगा। और अगर आपका 20% से ज्यादा फॉल हुआ है प्राइस या इंक्रीज हुआ है तो उस पर्टिकुलर डे के लिए वो ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाएगी। यू कांट डू ट्रेडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक फॉर अ डे। सो ये इतना अच्छा है कि या यू कैन टेक डिसीजन सो वाइजली कि आप पता कर सकते हो कि ऐसी मार्केट में क्या न्यूज चल रही है, क्यों उसका प्राइस सडन इतना फॉल हुआ। सो या ऐसे ही एक बार हुआ था कि 2020 में यस बैंक के साथ हुआ था। उसको बहुत लिक्विडिटी इश्यूज आ रहे थे तो उसका प्राइस अराउंड ओपनिंग प्राइस का 35 रुपीज, एंड सडनली उसका 10% ड्रॉप हो गया था प्राइस। तो मार्केट पे उसका शेयर 1 आवर के लिए हॉल्ट हो गया था। यू कैन ट्रेड इन दैट शेयर। सो तुम्हारे पास वो होल्ड टाइम होता है तो तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हो ना कि यार क्यों हुआ उसका प्राइस कम। यू कैन सर्च कि यार क्या चल रहा है। अब वो अगर यू हैव अ होल्डिंग ऑफ दैट शेयर तो आप तो डर जाओगे ना, क्या पता उसका प्राइस और गिर जाए। तो आप उसकी न्यूज वगैरह सर्च कर सकते हो। आपको बहुत इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि क्यों ऐसा हुआ, तो ताकि आप अपना डिसीजन बहुत वाइजली ले सको। सो एंड देयर इज वन टीपिन जनरेशन, दैट इज ट्रांजेक्शनल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक न्यूमेरिक पासवर्ड होता है जो कि आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है कि यार यू आर दिस, आप वो स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो। आप देखोगे कि आज की डेट में आप कभी भी बाय या सेल करने जाओगे शेयर, सबसे पहले आपके पास ओटीपी आएगा इन योर रजिस्टर्ड मेल एंड फोन नंबर कि या ऑथेंटिकेट योरसेल्फ कि हाँ आपको वो शेयर बाय या सेल करना है, आपके बदले कोई और वो चीज नहीं कर रहा है। एंड देयर इज एन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम कि उन्होंने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की, मतलब एजुकेशन पर्पस प्रोवाइड किया कि आप कहीं से भी नॉलेज ले सकते हो कि आज की डेट में मार्केट में क्या चल रहा है। देन बहुत जरूरी था कि इन्वेस्टर को एडुकेट किया जाए कि वो किसी भी गलत चीज में ना फंसे, उसके पास इतनी सफिशिएंट नॉलेज हो कि वो अपने डिसीजंस बहुत वाइजली ले सके। ऐसे इन्वेस्ट प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, इवन दो कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं जिसमें आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या आप रिस्क फेस कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। उसके बाद आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन कौन से स्कैम होते हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हो। दिस ऑल आर द एजुकेशंस अवेलेबल टू। बस ये है कि यू हैव टू टेक अ स्टेप
कि हाँ भाई यू आर गोइंग टू लर्न दिस, अगर आपको इन्वेस्ट करना है यू आर डूइंग दैट. वी कैन इवन टेक एन एग्जाम्पल लाइक जब आप कोई भी एक शेयर ओपन करोगे, सो यू कैन गेट टू नो कि भाई उसका डेली परफॉर्मेंस क्या है, उसका मंथली परफॉर्मेंस क्या है, उसका ईयरली क्या है, 5 years क्या है. ऑफ कोर्स अगर कोई भी कंपनी का यू विल सी कि उसकी अर्निंग या प्रॉफिट गिर रहा है, आप उसमें इन्वेस्ट तो नहीं करोगे ना. यू वांट कि यार मेरे को तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिससे मुझे हायर रिटर्न्स मिले, जिसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट मुझे अच्छा मिले. सो यू कैन इजिली चेक इन द while opening the app only, while seeing या shares का क्या चल रहा है. आप देख सकते हो कि उसके सर्किट ब्रेकर्स क्या है, उसका लोअर सर्किट क्या है, अपर सर्किट क्या है, ताकि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू अ पर्टिकुलर स्टॉक आपको इस चीज की नॉलेज हो कि अगर मैं आज इसमें इन्वेस्ट किया तो मैं कम से कम कितना रिस्क फेस कर सकता हूँ या मुझे कितना प्रॉफिट अर्न होगा. तो आप वो डिसीजन बहुत वाइजली ले सकते हो बाय नोइंग दिस वेरी बेसिक्स थिंग्स. आप देखोगे कि आपको ऐप में फंडामेंटल्स, उसके फाइनेंशियल्स वगैरह इतना इजीली अवेलेबल है कि आप चेक कर सकते हो कि हाँ कि आपको सही में इसमें इन्वेस्ट करना है. या व्हेन वी सी कि हॉल्ट टाइम वगैरह आ जाता है, यू कैन सी इवन द न्यूज ऑन दिस कि उस स्टॉक के रिलेटेड क्या न्यूज चल रही है मार्केट में. यू कैन सी कि अब उस स्टॉक का क्या इवेंट होने वाला है, उसकी मीटिंग कब है, एनुअल मीटिंग कब है, उसका डिविडेंड बटने वाला है, वो किसी के साथ मर्जर या एक्विजिशन में आने वाला है. So you can get to know this all so easily in itself. Like तुम देख सकते हो कि इतना आपको एक ऐप में उस शेयर के नीचे ही इंफॉर्मेशन उसकी प्रोवाइडेड है. उसके बाद you will see कि there are so many mistakes which even today's youngsters are doing. वो जैसे ही 18+ होते हैं दे आर कि यार हमको तो बहुत पैसा कमाना है, दे इन्वॉल्व इन द इंट्रा ट्रेडिंग एंड ऑल. सो यू कैन सी वो इंट्रा ट्रेडिंग करने करने के चक्कर में दे डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज इवन, वो कितना लॉस सफर कर जाते हैं. सो कुछ ना कुछ ऐसा इनिशिएटिव आना चाहिए ना कि या आपको नो डाउट भले पैसा अर्न करना है बट कुछ तो ऐसा हो कि आप पहले उस चीज को प्रैक्टिस कर सको. लाइक तुम सिर्फ देख रहे हो कि तुमको कमाना है, यू डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज, तुम किसी के गाइडेंस में आके, तुम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के गाइडेंस में आके इंट्रा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो गए, यू डोंट नो कि वो मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है. सो देर आर वेरियस इवन लेसन्स फॉर इन्वेस्टर्स कि भाई अगर तुम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, डू अ प्रॉपर रिसर्च. किसी के बोलने पे तुमको इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है. ओके दे माइट बी अ फाइनेंशियल एडवाइजर्स बट यू विल सी टुडे इवन कि सोशल मीडिया में हर कोई आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए आगे कि यार ये परचेस कर लो, ये परचेस कर लो. बट यू विल सी कि अभी ये बहुत नेसेसरी है कि आप सिर्फ उसकी एडवाइस फॉलो करो जो सेबी रजिस्टर्ड है. लाइक अगर आप ठीक है दे माइट फेस इशू आफ्टर दिस कि आपको उन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की बट आपका पैसा तो गया ना. सो बिलीव इन दोज हु आर सर्टिफाइड जो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड हैं. दिस इज योर ड्यूटी टू चेक वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट. ठीक है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करो. डोंट इन्वेस्ट इन ओनली वन स्टॉक कि आई हैव ओनली वन स्टॉक कि मैं सिर्फ एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, मेरे को तो यही प्रॉफिट देगा. मे बी यू कैन सफर अ हाई लॉस. तुम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, सीमेंट, बहुत सारी चीजों में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हो बाय सीइंग द मार्केट कंडीशन. मार्केट गवर्नमेंट किस में फोकस करेगी. लाइक अभी ही इनिशिएटिव आया था कि गवर्नमेंट विल फोकस ऑन द एनर्जी सेक्टर. सो ऑफ कोर्स आप देखो कि उससे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके बाद आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो. उसके बाद आपको अवेयरनेस होनी चाहिए स्कैम्स की कि ये स्कैम्स होते हैं, ये मेरे साथ हो सकते हैं, तो मैं उतना ही इन्वेस्ट करूं जितना मैं फेस कर सकता हूँ. सो दिस आर द लेसन्स फॉर इन्वेस्टर्स. उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज ने भी बहुत कुछ सीखा है कि ऑफकोर्स उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे थे ना कि आपने अच्छे से रेगुलेट नहीं किया एंड ऑल. तो कहीं ना कहीं दे आर प्रोवाइडिंग द डेमो अकाउंट फॉर यंगस्टर कि यार यू कैन प्रैक्टिस विद द फेक अमाउंट कि ठीक है थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग इन एंड प्लेइंग इन द रियल मार्केट. उसके बाद दे हैव इवन टेकन द वेरी एजुकेशनल इनिशिएटिव्स ऑल्सो कि आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, आपको स्कैम्स के बारे में पता चल रहा है. उसके बाद इतने स्कैम्स हो चुके हैं और इतना कुछ हो रहा है तो दे नो कि ठीक है वो अपने साइड से तो अब बहुत कुछ कर रहे हैं. नो डाउट दे स्टिल हैव टू डू मोर कि हाँ जैसे वो इन्वेस्टिगेट वगैरह करते हैं, दे हैव टू थिंक
कि ये थोड़ा फास्ट हो सके. So they are trying from their side. So it's the responsibility of investor only कि आपके पास जो है आप उसका better utilize कर सको. So that's all from my side, and thank you. Thank you so much, Palak, for that wonderful, wonderful session. ये बहुत ही complicated topic हो जाता है काफी लोगों के लिए who are not directly involved into ये commercial fields या फिर these um, ट्रांजैक्शनल जो हम डोमेन्स बोलते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज होती हैं बट आई थिंक यू सिंप्लीफाइड द टॉपिक अ लॉट यू मेड इट easier for people like us like me to understand who are not directly related to such fields ki how we can secure ourselves, we can secure our money, we can secure our like whole well-being that is dependent on such scams. And also, I think that the variety of case studies and examples that you have brought in for your talk have definitely catered to a much better understanding of how SEBI helps and how even we as investors should also be aware of before we invest into any such thing. So your topic was, I think, a perfect example of look before you leap. So thank you for that amazing session. We have quite a few questions in the chat box. So I will say that we have a few questions in the chat box that we would like you to have a look at. So one question that has been posted is, Yeah, wait for Yeah, 30 I guess seconds. there is Yeah, a network yeah, issue. wait for 30 seconds. If you're not going, then I'll ask. Yes, I'm so sorry for that sudden network glitch. Yeah, so I was saying that we have a few questions in the chat box that we would like you to have a look at. So one question that has been posted is that hardly 10 to 12% of Indians have demat accounts. So what steps can you suggest to attract more investors towards the share market? Yes, go ahead. Go ahead, Palak. Yeah. So, yeah, it's so true कि in today's world only some have Demat account. So, we can take the initiative to educate them कि you can get a better returns through stock and all. So you can open a Demat account, and it is so simple today to open. So if we can aware them of this all things, we can easily do this. Rightly answered. I received one more question, which was that in India's stock market, we have recently seen failures of IPOs recently. So, be it Paytm, Zomato, or Ola. In this volatile situation, what would be a good strategy according to you for the investors? Okay. So there might be we can see the IPO has been called, and so uh, I guess they uh, actually I'm not aware of that Yeah, much. So it's fine. It's fine. Yeah. It's completely fine, Palak. We do understand that your research was centered around a specific domain, and it's completely fine. You can work on that. I also received one more question personally, which was like you did talk about how SEBI rebuilds trust after financial scams, but can you elaborate a bit more about how it empowers investors or the upcoming investors? So, what would be your take on it? Yeah. of course, SEBI has done so much things. So now, see, they have done their part. Now they are even focusing more on that, but it's now in the hand of investor. कि यार, you have to think wisely before investing into it. You have to do proper research, and they have, of course, you can see they are providing us even an investor protection fund also, like if there is something fault done by the stockbroker or something, so they provide you a particular fund ki okay it's their mistake, so they compensate you with even that. So I think yeah, uh, they have been done so things, so now it's in your hand कि आप उस चीजों को कैसे ले रहे हो and all. So yeah. Right, rightly said, Palak. So it's like the
responsibility comes from the ends of the investors as well to be aware of what all things are going around in the market. I think that is it from the question side, which were pertaining to the talk that we had today. There is one more question that we asked to all of our speakers, which is about your experience at the platform. So, can you please elaborate on how has your journey been with GSTS so far? To be honest, I was so terrified in the starting कि पता नहीं ये कैसे होगा क्या होगा, and all thanks to the GSTS team कि they were supporting constantly, like they have provided me so much guidance and all कि I am here today speaking in front of you all so confidently and all. So that's all from my side. Thank you so much, Palak. You certainly have improved a lot in terms of your research skills and in terms of your confidence. And I must tell you, I must assure you that your presentation today was definitely very exceptional. It was a very good learning or a lesson for people like us. So thank you for being a part of this platform, and we would love to have you back again on the platform, maybe on this topic, a more refined version of it, or any other topic of your interest. So thank you so much. Thank you so much. Proceeding further, it is now time to invite our guest of honor back again. So I would like to invite ma'am. So can you please come up with your insights, suggestions, and comments about Palak's topic and also about the platform. So over to you, ma'am. Yeah, thank you. I'm sorry I didn't get your name. Anyways, thanks a lot. So first of all, I must congratulate Palak. Palak, it was a very well-structured presentation. What I liked about your presentation that you started with different kinds of frauds and you explained each of the frauds with an example. So which was very good. So what first you explained the scam, then you came to say Little lower down your camera, Minka. Achha, So okay. yeah. Is So better? you're in frame. Yeah. Thank you. So what I was saying that Palak's presentation was very well structured in the sense she started with different types of scams which India has faced till now. And with each of the different types of scams, she explained, she gave an example to it. So that was, it becomes much easier to understand the scam and the kind of scam it is. And then you came to SEBI. So what is the role of the SEBI and how the SEBI has been trying to improve on itself? So basically, with each scam, what happens, the SEBI comes to know about its weaknesses, the weakness of the security market, and therefore it has to work on it. So if we, and as you said towards the end, that it all depends on the investors. The investors have to educate themselves. But I must tell you, we cannot have a world where there will be no scams. So people will always find some loopholes in the market. However well protected you are, there'll always be some loopholes. So people are very intelligent, especially who are dealing with all these financial things. So there will always be some loopholes. They will always try to find out those loopholes and try to cheat you there. So, there was a question why only 12% of the people have invested in security markets. So from my understanding, I haven't done a research on it, but from my understanding, first of all, there is a huge income inequality. So major portion is middle income people, and most of the middle income people till recently are risk averse. So investing in security markets involves a lot of risk. So most of us are risk averse. Even I'm also a risk averse person. So that is another reason why there is a very less percentage of people who are investing in stock markets. So, but which should improve because SEBI has made a lot of improvements, a lot of regulatory improvements in it, which has made it foolproof. So, as I said, foolproof does not mean that there will be no scams. There will still be scams, but it has instilled some kind of confidence in the investors. So maybe in near future, we expect more people coming up and investing on stock markets. So that is one thing. And we need a very well-developed stock market. A well-developed stock market will help in mobilizing capital, which is good for economic growth. And as we grow, as economic growth happens, income increases, your stock market will also improve. So that's a few take from me, and very good. And I must say this what do you call it? GSTS. GSTS. So it's a very good platform which gives students to
look into topic, opportunity. work on it, research on it, and then there is a platform where you can talk about it, and you get inputs from other students as well. So congratulations to all of you, and congratulations to Palak. I guess this Thank was your you. first presentation here. Yes, ma'am. All the best. Thank you, Thank you Manish. so much. Thank you so much, ma'am, for your warm words and your precious insights. And thank you so much for your presence on a busy Sunday evening. So it was a pleasure to have you as our guest of honor on this day where we are achieving another of our milestone. So as I have mentioned before beginning with today's like proceedings, I mentioned that how our guests of honor and all these mentors and professors have been of great they have been great pillars of strength and motivation and all the research oriented guidance for our speakers. So it's also important to give special thanks to certain people who have been our supporters since the inception. So I would like to extend a very warm thanks to the fraternity, the teaching fraternity of Shyam Lal College Evening. That includes all the professors and also Pramod sir and DN Singh sir, who have been our biggest cheerleaders since the beginning of the platform, since its inception. To date. So thank you so much, all the professors. I might not be able to call out all the names as of now because the list is like it contains a lot of names from Shyam Lal College Evening and various other colleges across Delhi University. But it's a privilege to have all the professors like you with us who have mentored all these 190 talk sessions in very precise and in very diligent ways. So with this, it's now time to have a look at the upcoming session of GSTS. So the upcoming talk, which is the 191st session of GSTS, will be given by Mr. Khemchand, who is currently pursuing his master's in mathematics and computing from NIT Warangal. And since Mr. Khemchand is a bit occupied with his placement right this evening, I'd like to like give you all a very short introduction of what his talk is going to be about. So Mr. Khemchand is deeply passionate about machine learning, which brings his topic to the title, which is Assemble Learning in Machine Learning. So the objectives of his talk include to analyze assemble learning from perspectives including algorithms like bagging, boosting, stacking, and their applications towards particular problems in real life. His main concern while preparing the talk is to make it interesting, easy to understand, and relatable, and thereby he would like to make clear how the assemble learning techniques improve the performance of any machine learning model. Thirdly, he would like to give all of us the space to reflect on how these techniques, which we are learning today and we are surrounded with, find their ways into our own projects and our own work that we encounter every day. So making accuracy more prominent and reducing errors becomes a key feature of his talk. So on behalf of Mr. Khemchand and on behalf of the entire GSTS fraternity, we would like to invite you all to kindly show up on next Sunday at same time 5 p.m. on a topic which is very contemporary, it is very academic as well. So as we now reach to the conclusion of this program, I would like to thank you all for being a part of this evening, that too on a day where we are achieving another milestone, to repeat myself again. So I'm very much sure that all of you would have learned a lot of things, a lot of new perspectives, and I would like to say that the conclusion of this talk is the beginning of the countdown of our double century. So we would like to have you all constantly with us throughout the journey till 200 and more. So with this, I'll take a pause and I'll hand over the stage to Dr. Manish Karwar for his final remarks and the further proceedings. So, sir, over to you. Okay, thank you, Samriddhi. It's a really wonderful talk by Palak, uh, uh, my duty is to invite a few scholars and a few teachers and a vote of thanks. So today we cut short because this is totally a economics and commerce subject. So maybe if I would like to invite someone, so maybe that is not their
forte. That means I would like to say something. Firstly, I saw Madhu ma'am, Dr. Madhu from Miranda House, Madhvi, Bharti College, and from my former Pankaj sir from Arvindo College. So many faculty members are here. So thank you all for joining us. And the few take, I'm not going to take 600 seconds, so I wrap up in 300 seconds. So what is my take? This is the old age business that what you are talking about, the Palak, this is the fraud. So I think the fraud is the oldest business in Indian history because as I'm a history student, so I'm smiling, and those who are the connect to the history, even in Arthashastra, Manu Smriti, and Dharma Sutras, we found so many these kind of these kind of evidences, and if you go for the like Arthashastra, you will find so many instances and the remedies how to curb the fraud. So in the modern times, the idea of fraud may be changed, but it continued till ancient times. Okay. एक इंसिडेंट मुझे याद है, the conversation between the Akbar and Birbal, when Birbal told Akbar, like, look sir, this minister is not performing well, kindly give us a uh, duty where he did not perform any corruption, an extra. तो अकबर ने उसको भेज दिया, go and count the waves, जो लहर होती है आप उसको काउंट करो, और वहां भी उसने करप्शन का आइडिया निकाल दिया. दैट मीन्स उसने क्या किया कि भाई जो जो भी बड़े बड़े शिप्स आते थे उनको वहां रोक लिया. यू डू नॉट क्रॉस दिस थिंग बिकॉज this was from the this uh, idea from the great Akbar, so-called great Akbar's proposition. So what I'm trying to say that the whole idea of this fraud and corruption, it was not new in the mindset of the human being, because we had the oldest, not oldest in the modern time, oldest is what the South Sea bubble in 1700, 1920, apart from the Mississippi scam, and one is a Charles Ponzi and the Ponzi scam in during 1920s. I think from where we get this word Ponzi schemes, and and these all are the Western idea to grab the attention to the world, because what and the SEBI is the same style where the USA in USA SEC and the UK is FCA, Financial Conduct Authority, and the USA in the Securities and Exchange Commission. So where is the fault in the Indian system? Because early those, if you talk about the history and historicity, so what we exile the main idea, okay, you are doing some fraud, so we should exile from one place to another place. So what will happen? So you can curb your own ideas, own corruption ideas, and we do not forget that the oldest fraud in Indian times, what we are living in, is the British East India Company. That was a fraud company. They took abundant of money from the investors of UK and UK and USA. And what happened? What happened? He established the so many things. Okay, so I'm audible or not? Hello? Yes, sir, you are. Yeah, I'm audible. Okay, so yes, so and thank you very much. So the British East India Company was the most important idea where we inculcate that this whole corruption, because the British East India Company is the newest form of the fraud, because they took money from the investors in UK and the other parts, and they try to give them benefit, because people are learning that British East India Company was a trading company. No, that was the start with the fraud in UK. So I think Madhvi's and Madhu ma'am also both are from modern India, so they are
give me note that yes, these are these company that was the started with the fraud conception. So okay, so your topic is very pertinent in the contemporary world because right now the Hindenburg scam is going on and charges is going on. So on the SEBI, so still the SEBI in the bad perception, but SEBI did a fantastic job to curb so many things. And your idea that you give us a sense of how to protect our investment. So wonderful, Palak. At a young age, you are going to give us a the sense that look, because most of the people we are not aware about all these writings and what going in the share markets and everything because everybody is interested to buy and sell shares, but nobody interested to know the idea. And SEBI started so many good educational course also. I saw some on MOOCs also. So fantastic, Palak. As a young scholar, you are going to give us you definitely have an idea to give us a sense that how we invest in the share market. And thank you, the guest of honor. Um, Menka Singh for giving us a time where everybody is celebrating the Karwa Chauth. So and but Sunday is the fix for us, so we cannot change our schedule and time from last 119 Sunday. So thank you for coming and joining us, and I hope my young scholars give. Something to cherish about their ideas. And thank you, my all moderators, for giving us a wonderful 190th session in continuation. And all my faculty members from Shyam Lal Evening College, my old college, Rakesh is right now visible, Akriti is there, Gaurav is there. So thank you very much for this day. And definitely we are moving towards the 200 and it's not the grand celebration, but we are going to celebrate in the university also. So thank you very much. And so it's time to say goodbye for today. And definitely one aspiring student from the Shyamlal morning, he joined to the IIT Warangal. So next month we are going, next Sunday we are going to listen to him in a very interesting manner. So thank you very much. Have a nice day, all my graduate, postgraduate, MPhil, and PhD students. So it's over from my side.